जय मां शाला पिला माने मु सोमनाथ आपण मन सहित किसी सारदा फिजिक्स रो अमेजिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म को पिला माने पूर्व क्लास रे हम कोन देथिना पूर्व क्लास रे हम स्फीयरिकल बेसल्स फंक्शन देखिनिथिले एटा होचे लास्ट पार्ट कहारो थर्ड यूनिट रो फर्स्ट पार्ट रो एटा होचे लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन जोटा कि होचे स्फीयरिकल हार्मोनिक्स तो एटा आज हम स्टार्ट करबे स्फीयरिकल हार्मोनिक्स तो चलो पिला माने देखिबा स्फीयरिकल हार्मोनिक्स हम कोन अछि सो पिला माने देखो स्फीयरिकल हार्मोनिक्स पढिया गले हमको मु तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म तो पढे ही नहीं तो सेटा बोले सेकंड पार्ट रो अछि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट स्फीयरिकल कोऑर्डिनेट अलग अलग कोऑर्डिनेट अछि तो सेइथरा हमें से जिंसटा ही पढिया कोन लाप्लास ऑपरेटर इन स्फीयरिकल कोऑर्डिनेट हला तो स्फीयरिकल कोऑर्डिनेट ता पढि सारला परे तो सेइथरे ही जिंसटा देइछि तो मु एबे केवल ताको यूज करछि आ परे मु जतो सेटा को क्लैरिफाई करि सेटा पूरा बहुत से क्लैरिफाई करबी तो लाप्लास ऑपरेटर इन स्फीयरिकल कोऑर्डिनेट्स कोन कहछि माने देखा हम करिबा त स्फीयरिकल हार्मोनिक्स स्फीयरिकल हार्मोनिक्स एटा पिला माने प्राय तो बेले बेले लॉन्ग क्वेश्चन आसे तो एटा टिके देखिबो सो एटा कोन क्वेश्चन द लाप्लास ऑपरेटर इन द स्फीयरिकल लाप्लास ऑपरेटर कोन क्वेश्चन द ऑपरेटर इन स्फीयरिकल कोऑर्डिनेट is given by कौन कोचे तो ए क्लास रे मते टिके देखि किना पढे पडियो कारण जिंसटा एते सहज नुह बाकी पढिले आ जिथर प्रैक्टिस कले एते कष्ट भी नुह किंतु बहुत टाइम भी लागि गला वीडियो आनिया पे कारण जिंस मिलु भी नाही सब बही रे ठीक से देई भी नाही सो टिके टाइम लागि गला तो सेत पे मु दुखित तो चलो हमें देखिबा कोन मतलब लाप्लास ऑपरेटर इन स्फीयरिकल कोऑर्डिनेट कोन कोचे डेल स्क्वायर equal to del r square plus 1 by r square del square theta and phi जो ठीक है del r square equal to 1 by r del by del r square del by del r और कौन ना del square theta phi equal to 1 by sin theta del by del theta sin theta del by del theta into plus 1 by sin square theta del square by del phi square ओके सो एटा होची पिला माने कोन ना लाप्लास ऑपरेटर कोउथिरे ना स्फीयरिकल कोऑर्डिनेट रे हला स्फीयरिकल पोलर एटा पोलर कोऑर्डिनेट स्फीयरिकल पोलर कोऑर्डिनेट है एटा होची कोन देखो मोस्ट ऑफ द केसेस हम स्फीयरिकल कोऑर्डिनेट को केमिति डिनोट करू ना r थीटा और phi रे तो एटा होची स्फीयरिकल लाप्लास ऑपरेटर कोथरे ना स्फीयरिकल पोलर कोऑर्डिनेट जोटे कोची कोन एटा होची मेन इक्वेशन देन एटा तार सब्स्टिट्यूशन गुडा देन पिला माने हमें एबे कोन करबा ना हमें आउट इक्वेशन नबा जोटा ना होची कोन ना हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन नबा हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कोन कोची ना द हेल्महोल्ट्ज equation is given by Helmholtz equation पिला माने कोन कोचे ना del square psi of r theta phi plus k square of r of psi r theta phi equal to 0 एटा पिला माने कोन कोचे ना हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन देखो एठी हमें कोन अच्छे कहार वैल्यू जानछे डेल स्क्वायर वैल्यू जानछे डेल स्क्वायर हो कोन ना डेल r स्क्वायर प्लस 1 बाय r स्क्वायर डेल स्क्वायर थीटा फाई तो ताको हमें ए जगह रे पुट करबे इक्वेशन 1 रे हमें पुट करबा सो एटा होची इक्वेशन नंबर 1 पुट द above values on equation number 1 में हमें कौन करे पिला माने ना above value पुट करबा del square जगह रे कोन हमें पुट करबा ना del r square plus 1 by r square del square
theta phi ଆସିଗଲା ଠିକ ଅଛି then psi of r comma theta comma phi plus k square of r of psi of r comma theta comma phi equal to 0 ଏବେ କଣ କରିବା ନା del square r ଜାଗାରେ del square r ର ଭ୍ୟାଲୁ ପକେଇବା ଆଉ del theta phi ଜାଗାରେ del theta phi ର ଭ୍ୟାଲୁ ପକେଇବା del square r ଜାଗାରେ କଣ ପକେଇବା ନା 1 by r del by del r r square del by del r plus 1 by r square of 1 by sin theta अच्छा ये डायरेक्ट एक कथा करिया 1 by sin theta कोड़ा गला 1 by sin theta then del by del theta sin theta del by del theta plus 1 by sin square theta del square upon में del phi square ଏତିକି ଏଟା ତ ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ଟର୍ମ କାହାର यार वैल्यू टोटल गोटे टर्म देन आपरे हम कोन करबा ना psi of r theta phi plus k square of r psi of r theta phi equal to 0 okay so এটা আসিলা দেন আপরে हम कोन करबा एबे पिला माने कोन करबा ना psi को नबा लेट psi को r रो गोटे फंक्शन और थीटा और phi रो गोटे फंक्शन नबा टोटल दीटा फंक्शन नबा लेट psi of r theta phi equal to capital R of small r then y of theta phi बस इटा का हम नीचे कौन ना इक्वेशन नंबर 2 so put these on equation number 2 देखो equation number 2 रे पिला माने पुट कले कोन माने देखो थीटा फाई रे फंक्शन जोड सब डिफरेंशिएट हे कि अछि सेट सब पड़ी जिवो आ r रो फंक्शन जोड सब अछि सेट सब पड़ी जिवो आ जो रेस्ट टर्म धन्य एठी y of theta phi रेस्ट टर्म रहला सेटा बाहर रहिबो r square del by del r कैपिटल r of r एमति हबो हला सो ओके सॉरी गाइस मोर गोटे माय मिस्टेक मोर गोटे भूल हे जाइछे मु जो del r square रो वैल्यूटा बाहर करछि सेटा इक्वल टू 1 by r नो 1 by r square माय मिस्टेक एठी गोटे रहि जाइछे सेटा 1 by r square टिके पूर्व ये रे टिके करेक्शन करनबो हला एटा देन एबे हम कोन करबे आको पुट करले कोन हो ना देखाओ कैपिटल सॉरी y of theta phi divided by r square कारण ये टर्म r सहित लेना देना नहीं सो del by del r of r square then del by del r of capital R of small r ये टर्म शेष देन प्लस देखो ए टर्मटा आ संगे गुणा हो ए टर्मटा आ संगे भी गुणा हो ए टर्मटा आ संगे भी गुणा हो हला सो एटा भी कोन आसीबो ना प्लस देखो एटी किंतु थीटा टर्म अछि माने आकु जो हमें भांगिले कोथरे कैपिटल R ऑफ R रे y ऑफ थीटा फाई रे आकु जो हमें भांगिले आकु हमें कोन करबा ना y ऑफ थीटा फाई टा का धीरे आ संगे रखबा कैपिटल R ऑफ R टा कोन बाहर पळे आसीबो सो कैपिटल ऑफ R divided by R square of 1 by sin theta del by del theta del by del theta of
y of theta comma phi plus सेम जिनस 1/r² तो बाहर हो जाइए ना सेम जिनस ठीक अछि सो 1 sin square theta del square upon में del phi square of y of theta comma phi या काम सरियाला प्लस आकम लिख पे कोन k square of r capital R of r then y of theta comma phi equal to 0 हला तुम आको एमते लिख परली एबे मु कोन करबी अच्छा एबे कोन करबी ना डिवाइड करबी कहा को ना कैपिटल धन्य मु psi of r डिवाइड psi of r theta phi को मु डिवाइड करबी divide capital R of small r and y of theta and phi divide in above equation above equation में कौन करी ना डिवाइड करबे कहा को ना ए जिंस रो डिवाइड कले कोन हम देखो y of theta phi ये कोन हो कैंसिल जो रहिबो कोन ना 1/r² capital R of small r² of del by del r of r² del by del r of capital R plus इतना कैंसिल है जो कौन रहिबो 1/y of theta phi of r² देखो म आकु कोन कले ओनली थीटा और phi रो माने टर्म रे करबी आ ओनली एटा को मु भी जानि परने एटा को थर्ड यूनिट रे काई पुरे चल कारण आकु फोर्थ यूनिट रे ही पुरे देवा कथा कारण सेठी वेरिएबल ऑफ सेपरेशन रो तमरो अछि सॉल्व करिया पे सेठी एका थरे कर देतिला सेठी हेतांदा जे पुरे जनता पढिया पडिबो हला सो r² then 1/sin theta del by del theta y of theta phi plus 1/sin square theta then del square by del phi square y of theta phi yes yala plus k square of r equal to 0 yes yala k square of r equal to 0 एबे पिला माने कोन करबा ना मल्टीप्लाई करबा कोन ना r² कारण r² को हम सब हटायर अछि कारण एटा r² टा एटु हटियल एटा ओनली थीटा टर्म आसी जो एटा ओनली r टर्म आसी जो मल्टीप्लाई r² on above equation कोन करबा ना मल्टीप्लाई करबा कोन ना r² को मल्टीप्लाई करले कोन आसी जो 1 capital of r del by del r r² del by del r capital R of r plus 1/y of theta phi 1/sin theta del by del theta then y of theta phi plus यही आसी ना 1/sin theta del by del theta ठीक अच्छे प्लस 1/sin square theta del square upon में del phi square theta of y of theta phi ओके ठीक अच्छे प्लस k square of r is equal to 0 देन मु एबे पिला माने कोन करबी देखो एटा ओनली r टर्म रे आसीला एटा ओनली थीटा टर्म रे आसीला एटा r टर्म रे आसीला तो मको वेरिएबल सेपरेशन अलग अलग कर परबी अलग अलग करके म तो कोन लिख परबी
quantum mechanics. सो आगे मुझे कौन लिख पारि ठीक तो अच्छे डेल बाय डेल आर स्क्वायर डेल आर ठीक अच्छे 1 by capital R of small r of del by del r square del by del r of capital R of small r plus k square of r equal to आकोटे मु कौन कांस्टेंट टर्म नहीं परबी जार ना होची कौन देबी मु ना l of l plus 1 l of l plus 1 equal to कौन लिख परबी एटा पटे प्लस अछि तो कौन हो जो माइनस हो जो ओके तो पिला माने आको मु केमिति लिख परबी ना माइनस ऑफ 1 by y of theta comma phi y of theta comma phi को बाहर नहीं परबी ए वाला कौन लिख परबी ना 1 by sin theta del by del theta then y of theta comma phi सॉरी एटा तो बाहर को ही नेबी प्लस 1 by sin square theta then del square by del phi square of y of theta comma phi देखो तुम को कैंसिल कर दबनी ये कैंसिल हे परिबनी सेमति ही रहइबो सो एटा को म एमति लिख परबी तो म फास्ट कोन करबी देखो एटा LHS इज a function of r और RHS is a function of theta and phi सो मु आको अलगा नै किना को सॉल्व कर परबी ताको म सॉल्व करि किना ए जिनसटा म कोन लिखबी एपटा को तमे एबे छाड़ दियो एपटा हम पछरे करबा आगो एटा सो 1 by capital R of small r 1 by del r of r square del by del r of capital R of r plus k square of r equal to l of l plus 1 ओके सो एबे पिला माने मु कोन करबी ना डिवाइड करबी कोन ना डिवाइड करबी r स्क्वायर आ मल्टीप्लाई करबी कोन ना कैपिटल R ऑफ r divide r square on above equation and multiply capital R of small r and divide the r square and multiply करबा कोन तो एटा इज कोन 1 by r square del by del r of r square del by del r of capital R of r plus k square of r into capital R of small r upon my r square equal to also l of l plus 1 into capital R of small r upon my r square ऐसे होला तो एबे पिला माने कोन करबा restrict बुलटा कोटी हला 5 सेकंड पिला माने ओ हो ओके गाइस माय मिस्टेक टिके भूले जाई जोठी हमें मल्टीप्लाई करले ए जो तळे मो लिखि दिले एठी सेकंड लाइन को मल्टीप्लाई करले कोन ना r स्क्वायर ता मो एठी छाड़ दे जाई छी सो एटा r स्क्वायर ता मल्टीप्लाई हे कि ऑलरेडी अछि सो एटा r स्क्वायर कैंसिल हे जिवो कैंसिल हे पर रहइबो कोन ना k स्क्वायर ऑफ कैपिटल R ऑफ r जिंसो ओके सो आकु पिला माने मो कोन लिख परबी 1 by r square del by del r of r square del by del r capital R of r plus k square of r capital R of r equal to l of minus l of l plus 1 of capital R of small r upon r square
इक्वल टू 0 आको देबी केते नंबर इक्वेशन ना 3 नंबर इक्वेशन देन सेम जिंस मु सॉल्व करबी कहा पे ना आ पे सॉल्व कले कोन आसीयो सिमिलरली वी कैन फाइंड भाई तादर में गोटे r स्क्वायर उसको छाड़ देइन दो ना ठीक अछि सेटा सिमिलरली वी कैन फाइंड एई तो टिके टिके मिस्टेक होउछ बेली मु आज कागज धरि के आछि कि माने विश्वास करियोनी एते कष्ट हलानी एको खोजिया रूम फूम सब पूरा ओलिया हेकिना खाता बही चारटा पांचटा सब खोज देछि मु बेसिकली एमदास पिकेजना बहिरो पढ़ाए आउ एच के दास बेले बेले देखे तापरे ये बीडी गुप्ता हो कि आरडी शर्मा हो एउडा सब तुम देखे ना सेथरे भी नाही माने जेमति भी देछि तुम बुझी परिबनी एमति कोन डेरिवेशन टा गोटे स्टेप बाय स्टेप कले तुम थरे के दि थर कले मन रहि जो एग्जाम रे लिखिबो सइला कथा आ कोन पांच थर कोन +2 पांच थर बसिना कहतो छाड़ सिमिलरली हम फाइंड करि परिबे कोन ए जिंसटा कोन लिख परिबे ना देखो सो एटा देखो एटा माइनस अछि एपड आसले कोन जो माइनस l प्लस l माने ए जिंसटा प्लस करिवो ए जिंसटा माइनस हि जिवो तो मते कोन लिख परिबे ना 1 बाय कैमरा आसीओटी हां आसीओ ए ऊपर को आसुनी करे ठीक है चलियो सो 1 बाय कोन लिख परिबे ना 1 बाय y ऑफ थीटा कमा फाई अपॉन 1 बाय sin theta del by del theta plus 1 by sin square theta del square by del phi square of y of theta comma phi आगो अवश्य आ भीतर लिखले किछि असुविधा नै कारण माइनस ऑफ l of minus of l of l plus 1 ओके सो आकु देखो एठी एटा कोन हेजी गुणा हेजी एपडु पळले कोन हेजिबो सॉरी एपडु हरा हेजी एपडु पळले कोन जो गुणा हेजिबो गुणा हैला पर म एपडु को प्लस ने आसी पर सेम जिंस कॉमन नै पर तो एटा एंते बाहर अछि एटा केवल आनी ना भीतर लिख देले काम से सो आकु म कोन लिख परबी है 3 नंबर इक्वेशन ला केबे देखिबा सो मा को कोन लिख परबी ना एटा तो हटि जिवो कारण एपडु गले गुणा हे जिवो एठी हेले कॉमन पर आसीबो सो 1 बाय sin थीटा del by del theta plus 1 by sin square theta then del square by del phi square sorry plus l of l plus 1 l of l plus 1 of y of theta comma phi equal to 0 with कौन सॉरी हाँ इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 4 आपको दे देले कौन इक्वेशन नंबर 4 एबे हम कोन करबा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 4 इज कॉल्ड स्फेरिकल हार्मोनिक इक्वेशन नंबर 4 रो सॉल्यूशन ता हम कोन कहबा स्फेरिकल हार्मोनिक्स कहबा सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 4 इज कॉल्ड spherical harmonics it is sorry ni long question है spherical harmonics हला सॉल्यूशन इक्वेशन नंबर 4 रो सॉल्यूशन होछि पिला माने कोन spherical harmonics जोटा कि को फॉर्म रे अछि ना y of theta comma phi equal to अच्छा एठी जिंस तमर बुझबार अछि एटा होछि कैपिटल थीटा देखो ता भीतर ओडम छोटी है कि ना i टाइप रो लिखि छी of a small theta function then capital phi of a small phi देखो जो ए 11टा मु ऊपर को देइनी एटा को मु h परिका लिखि छै एटा पूरा बुझि परलो एटा होचे एक्चुअली ए जिंसटा होचे स्फेरिकल हार्मोनिक्स आमको क्या फाइंड करार छी कोन ना कैपिटल थीटा ऑफ थीटा और कैपिटल फाई ऑफ थीटा हला 5 सेकंड मुझे कैमरा हेल देखिते तो तापर हम एटा ओके सॉरी गाइस माय मिस्टेक टिके गोटे मिस्टेक हे जाई छी सो प्लीज करेक्ट कर दियो जिंसटा को एठी हम आउट टर्न पे छाड़ दे जाई छी 1 by sin theta del by del theta then sin theta del by del theta
प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा माने आज कागज धरिकी से पढ़ू काले या भितर माने विश्वास कर मैं 3 थर प्रैक्टिस कर सारे तथापि कोठी ना कोठी गोटे रही ही जाउची सो कोऑपरेट मी y of theta comma phi equal to minus l of l plus 1 ओके सो ये जिनसटा एठी गोटे मु छाड़ती जाईसी on del by del theta then sin theta del by del theta ओके एमती टिके बड़े बड़े लोगों का छोटा छोटा मिस्टेक हो ही जाता है सो ओके तो ठीक अच्छे आम कौन करवा ना y of theta comma phi रो वैल्यू का हाथ रे पुट करे इक्वेशन नंबर 4 रे पुट करिया हला पुट दिस वैल्यू put this value on equation number 4 रे पिला माने कोन करबा ना वैल्यू ए वैल्यू टा पुट करे किछि नै थीटा जगह थीटा टर्म रहबो फाई जगह फाई टर्म आसीबो सो एटा कोन हे जो ना कैपिटल फाई ऑफ फाई बाहर ऊपर आसीबो कैपिटल फाई ऑफ स्मॉल फाई बाहर को पड़े आसीबो देन 1/sin थीटा 1/sin थीटा then del by del theta of a sin theta del by del theta इति कौन हबो ना कैपिटल थीटा ऑफ स्मॉल थीटा प्लस सेम जिंस अब ये कैपिटल थीटा ऑफ स्मॉल थीटा बाहर ऊपर आइसो देन 1/sin स्क्वायर थीटा then del square capital phi अपन में del small phi square of capital small phi plus L of L plus 1 of capital theta of small theta and capital phi of small phi equal to 0 हला आपको हमें दे दवा कौन इक्वेशन नंबर 5 रे हमें कौन करबा डिवाइड करबा कहा को ना y of theta comma phi को जहां जगह रे के हमें पके परबा कौन ना कैपिटल थीटा ऑफ थीटा एंड 5 थीटा कारण हमको आपको भी थीटा और फाई थीटा अलग अलग टर्म रे ही टर्मिनेट करिया अछि डिवाइड y of theta comma phi on equation number 5 ता theta comma phi जोटर वैल्यू हो जाएगा सो एटा phi of 5 कटि जो रहइबो कोन ना 1 by capital theta of small theta रहइबो then 1 by sin theta del by del theta sin theta del by del theta capital theta of small theta plus एटा कटि जो रहइबो कोन ना 1 by capital phi of small phi 1 by sin square theta then del square phi of small phi अपन में del small phi square plus L of L plus 1 equal to 0 multiply करबा एबे कोन ना sin square theta multiply sin square theta on above equation sin square theta above equation में multiply कर कोन आसीबो इटा हां पर्याप्त जगह अछि sin theta अपन में कैपिटल थीटा ऑफ स्मॉल थीटा देखा आसुच ठीक अछि del by del theta of sin theta del by del theta
कैपिटल थीटा स्मॉल थीटा प्लस ये बेस जो कौन साइन स्क्वायर थीटा कटिज कौन ना 1/5 स्मॉल फाइ डेल स्क्वायर फाइ स्मॉल फाइ अपन में डेल फाइ स्क्वायर प्लस एल प्लस 1 of a sin square theta is equal to 0 थीटा टर्म से रखी फाइ टर्म टाक सेपरेट को नहीं जी हो प्रभु दया निधि कृपा बारिधि तो हैरान कर मैंने एमती हेल्ले भल हाँ मैंने फिजिक्स मैंने तुम एमती हिस्ट्री जो पढ़ला बेगिया मैं खाली बही खाता धरत पढ़ी दिंत बढ़िया हाँ रे मत भी माने माने फिजिक्स मत भल लगे कि फिजिक्स मत कष्ट देलानी ना मैंने जीवन हाँ कहीं नहीं था मुंड खराब कर सारे यार ओके कि मजा तो आसूची आक अलग अलग दुटा करदे कौन करिया साइन थीटा अपन में कैपिटल थीटा स्मॉल थीटा ए भाई पानी पड़गला देन डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा कैपिटल थीटा स्मॉल थीटा प्लस एल प्लस 1 ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आम या नवा कौन ना एम स्क्वायर नवा नहीं आग मुझे लिखी दूसरी इक्वल टू -1 कैपिटल फाइ ऑफ स्मॉल फाइ ऑफ डेल स्क्वायर कैपिटल फाइ ऑफ स्मॉल फाइ डिवाइडेड बाय डेल स्मॉल फाइ रो स्क्वायर आपको आम एमती यहाँ केवल मुझे सेपट को नहीं लिखिदेली तो देख यहाँ पे मैंने कौन ना थीटा ओनली फंक्शन ऑफ थीटा ओनली और यहाँ हूँ कौन ना फंक्शन ऑफ फाइ ओनली तो मुझे कौन लिखिपरि तो मुझे लिखी दूसरी LHS is function of theta only and RHS is function of phi only. So we can write the above equation आम कौन लिख पार दीन बंधु दई तारी दुख लगल मोहरी साइन थीटा अपन में कैपिटल थीटा स्मॉल थीटा डेल बाई डेल स्मॉल थीटा देन साइन स्मॉल थीटा डेल बाई डेल थीटा फंक्शन ऑफ कैपिटल थीटा ऑफ स्मॉल थीटा देख भाई माइनर मिस्टेक जहाँ भी देखता हो तुम टे एक्चुअली इफेक्टिव क्लास माने पिला माने बसथे क्लास कले सेति माने खुशी सेटा जे कि माने कोठी तुम गोटे भूल हेले हां पिला माने कहि देले वीडियो रे म कोन भी करी मनीष मात्रा के भूल तुम टे देखि ना करो हला सो प्लस एल ऑफ एल प्लस 1 ऑफ साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा इक्वल टू मार्क कौन नहीं पेरबी एम स्क्वायर नहीं पेरबी जेमते वेरिएबल सेपरेशन मेथड जेमते हुए सॉल्व हुए सॉरी एटा तो डिफरेंशियल इक्वेशन सो सेमते ही तुम कर परियो किछ असुविधा नहीं तो को नबा कोन हमें एम स्क्वायर नबा ओके एबे हमें कौन करिबा ना गाइस देखो एठी जोटा हेची एटा को एठी भी गुणीबा देन एम स्क्वायर साइड रे भी गुणा हबो सीआई है ना हाँ ठीक अच्छे सो मल्टीप्लाई कैपिटल थीटा स्मॉल थीटा ऑन एबव इक्वेशन में कौन करे मल्टीप्लाई करवा का कैपिटल थीटा सो हे कौन हो ना साइन थीटा डेल बाय डेल स्मॉल थीटा देन साइन थीटा डेल कैपिटल थीटा अपन में डेल स्मॉल थीटा ऑफ स्मॉल थीटा सॉरी हाँ प्लस एल ऑफ
L plus 1 into sin square theta into capital theta of small theta equal to m square of capital theta of small theta. ओके सो एबे देख एबे आम कौन करवा ना एबे जो मल्टीप्लाई है ओके डिवाइड कर दवा कौन ना sin थीटा आम डिवाइड कर दवा सॉरी sin स्क्वायर थीटा डिवाइड कर दवा डिवाइड sin स्क्वायर थीटा ऑन above इक्वेशन above इक्वेशन कौन करे sin स्क्वायर थीटा डिवाइड कर दवा सो कौन आ जावा ना 1 by sin थीटा del by del theta of sin theta del by capital theta of small theta del theta plus L of L plus 1 जेहेतु आम डिवाइड कर sin square theta कैंसिल हो capital theta of small theta equal to n square upon में sin square theta capital theta of small theta capital theta of small theta then एबे कौन करबा एटा को एपडू नै आसबा नै आसले कोन लिख परबा हम को हां एटा तो रह जाई छी छाड़ देखि लिख देबी कोन छी देखो ताको हमें कौन लिख परबा ना 1 by sin theta del by del theta और sin theta del capital theta of theta अपन में del small theta plus L of L plus 1 L of L plus 1 minus m square divided by sin square theta whole और कॉमन ने एक्चुअली कौन है जो ना कैपिटल थीटा ऑफ स्मॉल थीटा इक्वल टू 0 हला तो आर नाम कौन दे परबी ना इक्वेशन नंबर 7 सिमिलरली मु कौन लिख परी देखा आउटे इक्वेशन थिला जोटा कि फंक्शन ऑफ कौन थिला ना फाई थिला से फाई टर्म तक मु कौन लिख परबी देखा सेटा कौन थिला ना माइनस ऑफ 1 by capital phi of small phi similarly we can write minus 5 theta del square capital phi of small phi upon my del small phi square equal to m square एटा सेपरु पड़ले कोन हो माइनस हो जवा एटा सेपरु पड़ले गुणा हो जवा एपरु आसले कोन हो मिसा हो जवा ताको हम कोन लिख परबे ना del square capital phi of small phi upon my del small phi square plus m square capital phi of small phi equal to 0 एटा हो कोन इक्वेशन नंबर सॉरी एटा बुद्धि माय मिस्टेक गोटे भूल हो जाई एटा हो इक्वेशन नंबर 6 एटा हो इक्वेशन नंबर 7 इक्वेशन नंबर तो तुम देखि कि दे परिबो ना सो पिला माने एटा देखो इक्वेशन नंबर आगो हमें 7 रो सॉल्यूशन लिखिबा तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 7 इज गिवन बाय solution of इक्वेशन नंबर 7 को सॉल्व कर देखो एटा उडे नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन एटा को ये करी ना इंटीग्रेशन करी ना तुम वेरिएबल सेपरेशन में कर परिबो तो एटा को नहीं वेरिएबल सेपरेशन तो हबनी छाड़ा एटा नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन यार आको देखि कि ना भी तुम लिख परिबो आरो सॉल्यूशन कोन सॉल्यूशन बाहर कर दबो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट सेमेस्टर रे पढिछ फर्स्ट रे पढिछ प्रभु आ मु परिबिनी आठ अधिक मु परिबिनी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 7 इज गिवन बाय 7 is given by solution टा कौन आसबा ना capital phi of small phi equal to 1 by root over of 2 pi e to the power I m small phi आपको हम एक इक्वेशन दे दवा
इक्वेशन नंबर 8 दे दो इक्वेशन नंबर 8 एटा हला कहार सॉल्यूशन इक्वेशन नंबर 7 रो सॉल्यूशन सिमिलरली वी कैन फाइंड तमे इक्वेशन नंबर 6 पर भी लिखले चलथांता किंतु एठी भी लिखले चलिबो सिमिलरली वी कैन फाइंड माने सबटु मेन होची एई पार्टटा जदि तुम ठीक लिखलो तुम भीतर कोन लिखचा कोन नहीं मोस्ट ऑफ द केसेस रे के देखंतनी तो एई पार्टटा ही तुम ठीक लिखले चलिबो हला सिमिलरली वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 6 इज इक्वेशन नंबर 6 रो सॉल्यूशन कोन हबो ना कैपिटल ए हम सेटा लिखि दे छाड़ of theta capital theta of theta equal to p l whole to the power p to the power m then cos theta अच्छा पिला माने हमें कोन नेथिले देखा जत इक्वेशन नंबर 4 सॉल्यूशन बाहर करी मु कोन नेथिले कैपिटल y of theta, phi कोन मु नेथिली ना सेटा नेथिली कैपिटल थीटा ऑफ थीटा इनटू कैपिटल phi of स्मॉल phi हला तो मु सही जिंसटा को एठी लिख परबी कोन hence we can write अच्छा इक्वेशन नंबर पिला 8 टा काटी दबो हला hence we can write हमें कोन बोपा सॉरी जगन्नाथ दहर आज एटा सरीबो मो चिंता जीवो y of theta, phi equal to मु कोन लिख परबी ना कोन थिला सेटा ना phi of small phi into capital theta of small theta सो माको कोन लिख परबी ना a divided by तुम कह पुनी ए कोठा हला ए होचे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट और तार ओटे स्टैंडर्ड वैल्यू अछि p l टू द पावर m cos theta e to the power I m phi where a is the normalization constant which is eta kon na a equal to 2l plus 1 upon में 2 into l minus m रो factorial divided by l plus m रो factorial रो हे ये टाइम से जातो हां ठीक अछि चलिबो देखा तो जाउछ आउट नल अछि सेटा मुझे देखिए सो ए रो वैल्यू हमें पाई गले डायरेक्ट नै किना फाइनली हमें पाइबा y रो वैल्यू कोन ए प्रभु ए ठीक अछि finally we can write y of theta comma phi equal to y of small m theta comma phi दिखाउछ equal to 1 by root over of 2 pi then root over of 2l plus 1 upon में 2 l minus m whole factorial divided by l plus m रो factorial into p l to m cos theta into e to the power I m small phi which gives ये भी चलो छाड़ा न चलो इधर ही काम चलेगा पूरी the which gives the expression of कौन spherical harmonics तो ये थिला पिला माने कोन ना स्फीयरिकल हार्मोनिक्स जोटे कि हमरो सरी गला जे देन फर्स्ट पार्ट ता कंप्लीट हे जाय छै आ रहला कोन ना हमरो गामा बीटा फंक्शन तार प्रॉब्लम किछटा छै जोटे कि बहुत ही बढ़िया से माने एग्जाम रे आसे शॉर्ट नोट रे तो सेटा को हम प्रॉब्लम किछटा भी डिस्कस करी आ गामा फंक्शन कोन ताको भी डिस्कस करी तार रोड्रिगस फॉर्मूला तार किछटा प्रूफ भी अछि जोटा कि इंपोर्टेंट अछि सेउडा भी आजे तो सेउडा भी हम देखबा आ बीटा फंक्शन भी देखला पले थर्ड यूनिट सचिव तो ये थिला आज रो क्लास रहिली जय जगन्नाथ जय मां शाला।